everyone, welcome to ICRA IS. So today we are going to be covering our weekly compilation of current affairs, that is from the date of 9th May to 15th of May. The first news we have is about the Rakhi Gadi, जो कि एक साइट है, हड़प्पन साइट है in हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, और ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी हड़प्पन साइट है. It is located in Saraswati River Plain, some 27 kilometers from the seasonal Ghaggar River. अभी जो ongoing excavations हो रहे हैं वहाँ पे उसमें findings ये हैं, sorry, this is finding. So the excavation has revealed the structure of some houses, lanes and drainage system and what could possibly be a jewelry making unit. The ASA has also revealed pieces of copper, gold jewelry, terracotta toys, besides thousands of earthen pots and seals at excavation. And the noteworthy जो equity जो है जो मिली है यहाँ पे, that is both the mounts 1 and 3 include statite seals, terracotta unbaked ceiling with relief of elephants and Harappan site. तो ये थोड़ी सी जो ये 3-4 चीजें हैं ये आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे. प्रीवियस एक्सकेवेशंस की जो मेजर फाइंडिंग्स थी, एक cylindrical seal मिली थी with 5 Harappan characters, animal sacrificial pit lined with mud bricks and triangular circular fire altars, and findings also included blades, terracotta and shell bangles, beads and all these things. तो थोड़ा ये पढ़ लीजिएगा एक बार, but importantly ये 3-4 चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. मंकी पॉक्स, ये एक रेयर वायरल इन्फेक्शन है, अभी काफी न्यूज में है. Similar to smallpox, monkeypox is a zoonosis, that is a disease and is transmitted from infected animals to humans. ये थोड़ा वायरस के बारे में डिटेल है, आप थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़िएगा क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट है और अभी काफी न्यूज में है. इसका ट्रांसमिशन जो है डिटेक्टेड इन squirrels, Gambian poached rats, dormice and some species of monkey. मतलब ये जो monkey pox है ये सिर्फ monkey से ही नहीं आता है, ये वायरस और भी कई स्पीशीज में आपको देखने को मिलता है. इसका जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है दैट इज वेरी लिमिटेड. तो ये छोटी छोटी चीजों का थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है. ट्रांसमिशन कैन बी थ्रू कॉन्टैक्ट विद बॉडीली फ्लूइड्स, lesions on the skin or on internal mucous surfaces. इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि बे फीवर आ जाता है, हेडेक होता है, मसल एक होता है, बैक एक होता है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करते हैं. इसका ट्रीटमेंट है कि देयर इज नो सेफ प्रूवन ट्रीटमेंट फॉर monkeypox yet and WHO recommends supportive treatment depending on the systems. Lunar eclipse, blood moon. So अभी recently a total lunar eclipse on or Chandra Grahan will occur over South America, most of North America and parts of Europe and Africa. This will be the second eclipse of the year after the April 30 May 1st का जो partial solar eclipse था, that was visible in parts of southern hemisphere. Total lunar eclipse होता क्या है? So the moon usually turns a deep dark red because it is illuminated by light that has passed through the Earth's atmosphere and has been bent back towards the moon by refraction. A total lunar eclipse occurs when the moon and the sun are on the exact opposite sides of the Earth. Now why is red, मतलब ये जो blood moon है, why is it red? Red color जो है ये क्यों आता है? तो it is because of the way light travels through the Earth's atmosphere. Sunlight is made of several colors and they all have different wavelengths, and depending on the way they travel through our atmosphere we see different colors, and that's why the sky and the sun have different colors during sunrise and sunset, है ना? Blues and purples have shorter wavelengths and scatter in our atmosphere and giving the sky its inky color. But reds and oranges have the highest wavelengths and pass through our atmosphere before it is bent or reflected around the earth, hitting the surface of the moon and making it red. तो ऐसे सवाल थोड़े आ जाते हैं प्रीलिम्स में. अब सुपर मून क्या होता है?
तो सुपर मून तब होता है जब जो मून की ऑर्बिट है इट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ का ऑर्बिट एट द सेम टाइम दैट द मून इज फुल, है ना. इन अ टिपिकल ईयर देयर मे बी 2 to 4 सुपर मून्स एंड 2 to 4 न्यू सुपर मून्स इन अ रो. Value of the vote of MPs in presidential elections. So, due to the absence of a legislative assembly in Jammu and Kashmir, the value of the vote of the member of parliament is likely to go down to 700 to 708 in presidential polls scheduled in July. इसका बैकग्राउंड थोड़ा देख लें अगर तो बिफोर इट वाज बाइफर्केटेड इनटू 2 union territories of Ladakh and Jammu Kashmir in August 2019. The erstwhile state of Jammu and Kashmir had 83 assembly seats. And according to Jammu and Kashmir Recognition Act, the Union Territory of Jammu and Kashmir will have the legislative assembly, while Ladakh will be governed directly by the center. एक एमपी के वोट की कीमत क्या होती है? तो एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स इन legislative assemblies of the state and union territories including Delhi, Puducherry, Jammu and Kashmir. ये थोड़ा एक ट्रेंड है द वैल्यू ऑफ वोट का, ये आप देख सकते हैं. हाउ प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, तो जैसे पता होगा आपको कि एक इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम होता है, उसके थ्रू प्रेसिडेंट्स का इलेक्शन होता है वेयर इन द वोट्स आर कास्ट बाय द नेशनल एंड स्टेट लेवल लॉ मेकर्स. और जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है. थोड़ा प्रोसीजर वगैरह आप एक बार देख लीजिएगा. China-Taiwan relations. Taiwan hopes that the world would sanction China like it is sanctioning Russia for its war on Ukraine if Beijing invaded the island. तो अभी जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है तो काफी ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि जो चाइना है वो भी ताइवान को ऐसे ही इन्वेट कर सकता है. तो भाई चाइना जो ताइवान है वो उनका कहना ये है कि भाई जो चाइना है उस पर भी ऐसे ही सैंक्शन लगाए जाएंगे जिस तरीके के सैंक्शंस रशिया पे लगाए गए हैं. Taiwan has joined in Western-led sanctions on Russia for its invasion of Ukraine. Why war on Ukraine has brought the spotlight on Taiwan? जैसा कि भी बताया कि देखिए Ukraine's plight has won broad public sympathy in Taiwan due to what many people view as the parallels between what is happening in Ukraine and what could have happened if China ever uses force to bring Taiwan. It claims that it's owned under Chinese control. और रिसेंट जो कुछ क्लैशेस हुए हैं इनके बीच में कि चाइना की जो आर्म फोर्सेस हैं दे कैरीड आउट अनदर राउंड ऑफ एक्सरसाइज नियर ताइवान लास्ट वीक टू इम्प्रूव देयर कॉम्बैट ऑपरेशंस. तो थोड़ा ये बैकग्राउंड है चाइना ताइवान के रिलेशंस का, ये आप थोड़ा देख लेंगे फॉर योर ओन बेटर अंडरस्टैंडिंग. लेकिन प्रेजेंटली चाइना जो है वो ताइवान को क्लेम कर रहा है and which refuses diplomatic relations with countries that recognize the region. ये देख सकते हैं ये चाइना है और ये छोटा सा ताइवान जिसकी कैपिटल है ताइपे. ये रहा हमारा साउथ चाइना सी. अब इंडिया की पोजीशन क्या है इस पूरे मुद्दे पे? तो इंडिया की जो पॉलिसी है ऑन ताइवान इज क्लियर एंड कंसिस्टेंट and it is focused on promoting interactions in areas of trade, investment, tourism among others. And government facilities and promotions जो होते हैं in areas of trade, investment, tourism, culture, education and other such people-to-people exchanges. However, India does not have formal diplomatic relations with Taiwan, but both sides have trade and people-to-people ties. ये आई थिंक न्यूज रिपीट हो गई है. कोल गैसिफिकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? टू हेल्प इंडिया बिकम एनर्जी इंडिपेंडेंट the Ministry of Coal has proposed 50% concession in revenue share to promote coal gasification. If the successful bidder consumes the coal produced either in its own plants or plant
of its holding, subsidiary, affiliate, associate for coal gasification or liquidification of, or sells the coal for coal gasification or liquefaction on an yearly basis. ठीक है, ये जो है ये yearly basis है, subject to conditions that at least 10% of the scheduled coal production as per approved mining plan for the year shall be consumed or sold for gasification or liquefaction, then the bidder can avail of concessions. ये इसकी थोड़ी एलिजिबिलिटी है. एंड व्हाट इज कोल गैसिफिकेशन? टर्म तो हमने देख लिया, इसका मतलब क्या होता है. तो इट इज कंसिडर्ड अ cleaner option compared to burning coal. It is the process of producing syngas, a mixture of consisting of carbon monoxide, hydrogen, carbon dioxide, natural gas, and water vapor. How it is done? So it facilitates utilization of chemical properties of coal. During gasification, coal is blown with oxygen and steam while also being heated under high pressure. During the reaction, oxygen and water molecules oxidize the coal and produce syngas. इसके बेनिफिट्स क्या हैं? तो देखिए, ट्रांसपोर्टिंग गैस इज अ लॉट चीपर देन ट्रांसपोर्टिंग कोल. Help address local pollution problems, has greater efficiency than conventional coal burning. इसको लेके ना कुछ concerns and challenges भी है. वो ये है कि coal gasification is one of the more water intensive forms of energy production. There are also concerns about water contamination, land subsidence, and disposing of wastewater safely. इंडिया की जो कोल डिपेंडेंसी है, तो देखिए इंडिया जो है इज द लार्जेस्ट इम्पोर्टर, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर ऑफ कोल एंड हैज वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्व्स, है ना. एंड इट मेनली imports फ्रॉम इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका. रिसेंट रिफॉर्म जो है कोल सेक्टर में वो ये है कि कमर्शियल माइनिंग जो है कोल की अलाउड विद 50 ब्लॉक्स टू बी ऑफर्ड टू प्राइवेट सेक्टर्स. थोड़ा प्राइवेटाइजेशन जो है वो यहाँ पे भी आ गया है. और एंट्री नॉर्म्स लिबरलाइज्ड एज इट हैज डन अवे विद द रेगुलेशन रिक्वायरिंग पावर प्लांट्स टू यूज वॉश्ड कोल. नेमिंग ऑफ द साइक्लोन. Cyclone Asani has developed over southeast region of Bay of Bengal. So how the cyclones are named and how and what are the guidelines on adopting their names? देखिए 2000 में क्या हुआ था? A group of nations called WMO या ESCAP, that is Escape, World Meteorological Organization, and ESCAPE मतलब United Nations Economic, Social and Commission for Asia and the Pacific, which comprise Bangladesh, India, Maldives, Myanmar, Oman, Pakistan, Sri Lanka, and Thailand, and decided to start naming cyclones in the regions. After each country sent in suggestions, ये जो पैनल होता है WMO एस्केप का ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, एक लिस्ट को फाइनलाइज करते हैं और ये जो पैनल है ये एक्सपैंड करता है टू इंक्लूड 5 मोर कंट्रीज इन 2018. मतलब 2000 में तो ये नेशंस थे, इतनी कंट्रीज थी, लेकिन 2018 में ये 5 कंट्रीज और जोड़ दी गई. ठीक है. और 169 साइक्लोन्स के नेम्स हैं इस लिस्ट में जो कि रिलीज किए गए हैं अप्रैल 2020 में. दे वर प्रोवाइडेड बाय दीज कंट्रीज और 13 सजेशंस लिए गए थे सभी 13 कंट्रीज. ठीक है. अब साइक्लोन्स को जो इनका नामकरण है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो देखिए, अडॉप्टिंग नेम्स फॉर साइक्लोन्स मेक्स इट easier for people to remember. With a name, it is also easy to identify individual cyclones, create awareness of its development, rapidly disseminate warnings to increase its community preparedness, and remove confusion where there are multiple cyclonic systems over a region. What are the guidelines to adopt names to the cyclone? ये थोड़ी सी guidelines है, आप देख सकते हैं, इतना कुछ important नहीं पर फिर भी देख लें तो अच्छा. आधार. तो why it was a new? जो ये आधार है, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI has opposed a petition by Delhi police seeking directions from the court that would allow investigators to match a suspect's picture and handprints, that is the latent fingerprints from the crime scene with the Aadhaar database to help identify the accused in a murder case, है ना. तो जो UIDAI है
which issues the Aadhaar, unique Aadhaar number to the residents of India, is prohibited by law sharing any core biometric information with police. तो हुआ ये था कि जो दिल्ली पुलिस है वो दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने अप्रोच किया था अंडर सेक्शन 33(1) of the Aadhaar Act, according to which a judge of a high court can order disclosure of information on an entity in certain cases, और ये certain case जो था इस बार था case of murder. सेक्शन 33(1) ये कहता है कि नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 5 ऑफ द सेक्शन 28 और सबसेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 29, दैट इज अ लॉट ऑफ सेक्शंस, पर इतना डिटेल में ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारे को क्लैरिटी बढ़े. तो ये जो है ये शैल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन और authentication records made pursuant to an order of the court not inferior to that of a judge of a high court. तो बस ये 33(1) जो है एक छोटा सा सेक्शन है जो कि प्रोहिबिट करता है कि भाई आप नहीं एक्वायर कर सकते ये सब इंफॉर्मेशन. अब यूआईडीए का क्या कहना है इसमें? तो उनका ये कहना है कि जो दिल्ली पुलिस की जो रिक्वेस्ट है इस कॉन्ट्ररी टू सेक्शन 29 of the act which prohibits it from sharing core biometric information और फिंगरप्रिंट. जैसे कि अभी कोर बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन में क्या क्या आता है, तो इसमें आता है फिंगरप्रिंट आता है, आइरिस स्कैन आता है, या कोई भी दूसरी बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आते हैं विद एनी एजेंसी फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर. और यूआईडीआई ने ये भी कहा है कि नो आधार डेटा कैन बी शेयर्ड बाय एनी इंडिविजुअल और एंटिटी विद एनीवन विदाउट द कंसेंट ऑफ द रेजिडेंट और होल्डर ऑफ द आधार. ये थोड़ी सी और डिटेल है इस केस के बारे में, तो आप सब पढ़ सकते हैं. यूआईडीआई क्या होता है? तो एक अथॉरिटी है इंडिया में जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एस्टैब्लिश्ड इन 12 जुलाई 2016 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द jurisdiction ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. एंड जो है कुछ प्रोविजंस हैं आधार के जो नीचे मेंशन है, वो ये है कि ये दे आर मैंडेटेड टू असाइन अ 12-digit यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर टू ऑल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया. और भी हैं वो हमने ऐड नहीं किया क्योंकि इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट टू रीड. ये जो है न्यूज़ थोड़ी सी आप पढ़ लें क्योंकि आधार वगैरह काफ़ी आजकल न्यूज़ में है. माइनॉरिटी स्टेटस इन इंडिया. Supreme Court expressed a displeasure over the central changing its stand on a plea that sought minority status for Hindus where their numbers have gone below other communities. तो हुआ ये था कि मार्च की शुरुआत में एक एफिडेविट द सेंटर हैड sought to shift the onus of granting minority status on states, stating center and the state have concurrent powers to do so. However, in a fresh affidavit, it said the power is vested with the center to notify minorities. बैकग्राउंड ये है इसका कि एक प्ली डाली गई थी जिसमें ये कहा गया था कि हिंदूज आर इन अ माइनॉरिटी इन 6 states and 3 union territories of India, but was allegedly not able to avail themselves of the benefit of schemes meant for minorities. प्ली ने ये भी दिखाया, जो प्ली डाली गई थी इसमें ये भी दिखाया गया कि 2011 का जो सेंसस है, हिंदूज हैव बिकम अ माइनॉरिटी इन लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड पंजाब. They should also be given minority status in these states in accordance with the principle laid down by the Supreme Court in 2002 TMA Pai Foundation and 2005 Bal Patel case ruling. The petition also argued कि जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, एक्ट जो है 2004 का, इट गिव्स अनब्रिडल्ड पावर टू द स्टेट एंड इज manifestly arbitrarily irrational and offending. जो केस हमने ऊपर मेंशन किए हैं ये थोड़ा से आप देख सकते हैं. अब इसमें सेंटर का स्टैंड क्या था, मतलब पहले क्या था? तो अर्लियर सेंटर स्टेटेड दैट पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव कॉन्करेंट पावर्स टू enact law to provide for the protection of minorities and their interests. States can also certify institutions as being minority institutions, and the center pointed out that Maharashtra had notified Jews as a minority committee in
16। इन कर्नाटका में ही उन्होंने नोटिफाई किया था उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, तुलु, लमानी, हिंदी, कोंकणी, गुजराती as minority languages. But now in a fresh, it contended that the power is vested with the center to notify the minorities. जो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी है 1992 में बना था और रिसेंटली जो माइनॉरिटी कमीशन है became the statutory body and was renamed as NCM. इसी कॉम्पोजिशन में कौन कौन होता है इसमें, तो एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है, 5 मेंबर्स होते हैं एंड ऑल ऑफ देम शैल बी फ्रॉम अमंग्स द माइनॉरिटी कमिटी. टोटल ऑफ 7 persons to be nominated by the central government should be amongst persons of eminence, eligibility, ability and integrity. और उनका जो टेन्योर होता है 3 साल का होता है फ्रॉम द डेट ऑफ assumption of the office. इनके फंक्शन यही होते हैं कि भाई एवेल्युएशन करना क्या क्या प्रोग्रेस हुई है माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट में, माइनॉरिटीज़ का वर्किंग कैसा हो रहा है, उनके सेफ गार्ड्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए इफेक्टिव जो है रिकमेंडेशंस देना, इन्वेस्टिगेट करना कुछ भी कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, राइट्स हुए हैं तो उनमें. अब माइनॉरिटीज़ को लेके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं, तो आर्टिकल 29 है ना, इट ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस माइनॉरिटीज एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज. आर्टिकल 30 है तो ये है कि establishes the right to administer educational institute of their choice and protection under Article 30 is confined only to minorities. आर्टिकल 350B जो है ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था 1956 के एंड इंसर्टेड द आर्टिकल व्हिच प्रोवाइड्स फॉर द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक minorities appointed for the by the president of India. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5. इसके हाइलाइट्स ये हैं कि देखिए चाइल्ड न्यूट्रिशन. The survey has found out that 89% of children between the formative ages of 6 to 23 months do not receive a minimum acceptable diet and only marginally better than 90.4% recorded in National Family Health Survey 4, है ना, जो इसके पहले वाला हुआ था उसमें. Among all states, union territories, the proportion of children aged 6 to 23 months who received a minimum acceptable diet was highest in Meghalaya and the lowest was in UP and Gujarat. Apart from Gujarat and UP, 5 other states जो हैं, they have recorded a lower than national level proportion, that is 11% of children receiving adequate diet. The minimum acceptable diet is a composite of 2 main things. पहला है ब्रेस्ट फीडिंग एंड इट्स फ्रीक्वेंसी अप टू 2 years और दूसरा है डाइटरी डाइवर्सिटी. Deficiency in diet in a child's formative years has a direct bearing on malnutrition. This is the most direct indicator of child malnutrition, जो कि है stunting, wasting, underweight children, and India has one of the highest malnutrition burdens in the world. एज पिरामिड ऑफ इंडिया, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है इट रिमेन्स यंग विथ मोर देन 1/4 एज लेस देन 15 years and less than 8th over 60. There have been only a slight dip in young under 15 population has declined by 2% points and from 29% to 27%, while the over 60% population has increased as many points from 10 to 12%. हाउस होल्ड्स में ये है कि जो एवरेज हाउस होल्ड्स का जो साइज है इट हैज इंक्रीज्ड स्लाइटली बिटवीन 2015 टू 16 से अभी तक, मतलब कि 2019 से 21 फ्रॉम 4.6 टू 4.4. Exchange rate. The rupee fell to an all-time low and is currently at 77.22 American dollar. अब ये जो एक्सचेंज रेट है जो इतना हम पढ़ते रहते हैं ये सिग्निफाई क्या करता है, देखिए रुपी जो है उसका जो एक्सचेंज रेट है अब ये जो है ये पर्टिकुलर करेंसी को बताता है और ये हमें बताता है कि हाउ मेनी रुपीज आर रिक्वायर्ड टू बाय अ पर्टिकुलर करेंसी, है ना. जैसे अभी हमें एक 77.20 दे के एक अमेरिकन डॉलर खरीदना पड़ता है. तो इफ द रुपीज एक्सचेंज रेट फॉल्स इट इम्प्लाइज दैट बाइंग अमेरिकन गुड्स वुड बिकम costlier. At the same time, Indian exporters may benefit because their goods are now more attractive, cheaper to American customers.
अब ये एक्सचेंज रेट जो है ये डिटरमाइन कैसे किया जाता है? तो इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी the exchange rate is decided by the supply and demand for rupees and dollars. However, in India, the exchange rate is not fully determined by the market. From time to time, the RBI interventions in the foreign exchange, that is the forex market, to ensure that the rupee price does not fluctuate too much or it doesn't rise or fall too much at all at once. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है किसी कंट्री का कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक सिस्टम ऑफ ऑल economic transactions of a country with the rest of the world during a specific period, usually 1 year. It indicates whether the country has a surplus or a deficit on a trade. When exports exceeds imports, there is a trade surplus, and when import exceeds exports, there is a trade deficit. ये जो कंपोनेंट्स है बैलेंस ऑफ पेमेंट के ये होते हैं कि फॉर प्रिपेयरिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर grouped under currency account, capital account, errors and omissions. It also shows changes in foreign exchange reserves. अभी करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होते हैं, ये सब आप थोड़ा सा देख लेंगे. अब ये रुपी का जो एक्सचेंज रेट है ये इतना फ्लक्चुएट क्यों होता है? तो ये फ्लक्चुएट इसलिए होता है कि देखिए एक तो रीज़न है कि एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, ये जो अफेक्ट ये जो है ये अफेक्ट करता है एक्सचेंज रेट को, एज एक्सपोर्ट्स अर्न ऑफ फॉरेन करेंसी वाइल इम्पोर्ट्स रिक्वायर पेमेंट्स इन फॉरेन करेंसी. इंटरेस्ट रेट क्या होता है? तो ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स, corporate securities, etc., affect the outflow and inflow of the foreign currency, and the US central bank raises its interest rates and looks set to raise them further in the future. अब इसमें जो है आरबीआई का थोड़ा सा इंटरवेंशन भी होता है और इन्फ्लेशन भी जो है, जैसे कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत एकदम से ऊपर चले जाते हैं, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. राइट्स ऑफ क्राइम विक्टिम्स. A Supreme Court has stated that victims of a crime ought to be heard at all stages of a trial. ये जो केस है जगजीत सिंह वर्सेस आशीष मिश्रा 2022 का, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये एक शार्प रिमार्क दिया है कि लेजिटिमाइजिंग द क्लेम्स ऑफ विक्टिम्स टू पार्टिसिपेट इन द क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस. द कोर्ट ऑब्जर्व्ड that our criminal justice system conflicts with this, combines the presence of state with the presence of the victim. Such conflation is attributable to the traditional understanding of the criminal process, whereas the trial is a contest between the state and the accused only. इसका इम्पैक्ट क्या होता है? तो जो विक्टिम होते हैं दे आर डिफाइंड इन द सीआरपीसी बिकम्स अ victim only after an accused has been charged with the offense. तो जो judgment है, it overcomes this bar to provide the victim with the right to be recognized as a victim immediately after the occurrence of the offense. And third, the judgment states that the victim has unbridled participatory rights from the stage of the investigation. तो इसमें किया क्या जा सकता है? तो भाई इसमें ये किया जा सकता है टू प्रोवाइड लेजिस्लेटिव रिकॉग्निशन टू द प्रिंसिपल ऑफ द पार्टिसिपेशन व्हिच हैज रिसीव्ड द जुडिशियल स्टैम्प ऑफ अप्रूवल, amend the CRPC in order to facilitate the recognition of victims, and such legislative incorporation can grant recognition to the rights of victims as well as secure their membership by the lower judiciary as well as the functionaries to the criminal justice system. ये जो योजनाएं हैं इन्होंने 7 साल पूरे कर लिए हैं. कौन कौन सी योजनाएं हैं? ये जो है सारी की सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं. कौन कौन सी? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना. इन्होंने 7 साल कंप्लीट कर लिए हैं of their launch. When were the schemes launched? So they were launched on May 9, 2015. ये इन स्कीम्स के बारे में कुछ डिटेल्स हैं, ये आप पढ़ सकते हैं क्योंकि 7 साल हो गए हैं तो थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत है. So that is all for today. Thank you for watching.